Jaya Gopikana Vallabha Girivara Jaya Gopikana Vallabha Girivara Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Vanam Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodana Nandana Jamuna Tira Jamuna Tira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha, Jaya Radha Madhava Radha, Madhava Radha. Jaya Radha Raman Radha, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Premanande, Jayam Vishnupada Paramahamsa, Paribhadgacharya Stotra Satya Sri Simad His Divine Grace, Shirabhai Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Iskandi BT Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada Ki, Namacharya Srila Harinatha Thakur Ki, Samaveta Bhakti Vrinda Ki, Grantaraj Bhagavatam Ki, the anti-gold of Himalande, all glories to the assembled devotees of the Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Gyananjana Salakaya, Taksurandalitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sahitam Jena Bhuttade Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jita Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Syam Sri Rupam Sahajatam Saharijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalindo Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vaishnavebhyo Vaishnavebhyo Namo Naram Saiva Narotamam
Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamati Rayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, Goddess of Learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, and becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Uttama Charitam Shakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastayanam Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all incarnation of God, Srila Vyasadeva, it is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sadhyaya Namaha. Om Sadhyaya Namaha. Om Sadhyaya Namaha. Mukam karoti vachalam pangum nangayate girim yat kripa tamaham bande Sri Varum Dinataranam yat kripa tamaham bande Sri Varum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome to our Bhagavatam class, reading from first canto, the Srimad Bhagavatam, chapter. And today I believe is text 20 is it? Huh? 30, yeah, 32. Yatha ihi avahito vanir darushu eka sva vishvatma bhuteshu cha tatha puman yatha yavahito vanir dareshveka swayonishu naneva bhakti vishvatma
translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. The Lord as super soul pervades all things, just as fire permeates wood, and so He appears to be of many varieties, though He is the absolute one without a second. परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ लकड़ी के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इसी प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। Report. Lord Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, by one of His plenary parts, expands Himself, can be perceived even within the atomic energy. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से संपूर्ण भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के अंदर देखे जा सकते हैं। Matter, antimatter, proton, neutron, etc. are all different प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो अणु होते हैं स्पेस से आदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के भिन्न परिणाम हैं। As from wood, fire can be manifested, or as butter can be churned out of milk, so also the presence of the Lord as Paramatma can be felt by the process of legitimate hearing and chanting of the transcendentals, the Upanishads and Vedanta. जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में श्री भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिसका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्यों में विशेष रूप से हुआ है। The Lord can be realized through the oral reception of the transcendental message, and that is the only way to experience the transcendental subject. भगवान की अनुभूति का जो दिव्य संदेश श्रवण यानी सुनने के द्वारा किया जा सकता है, और दिव्य विषय का अनुभव करने का ये एकमात्र तरीका है। As fire is kindled from wood by another fire, the divine consciousness of man can similarly be kindled by another divine grace. जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। His divine grace, the spiritual master, can kindle the spiriting proper spiritual messages injected through the receptive ear. श्री श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप में जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले करणों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। Therefore, one is required to approach the proper spiritual master with receptive ears only, and thus divine. मित्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति होती है। The difference between animality and humanity lies in this process only. पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है।
a human being can hear properly, whereas an animal cannot. मनुष्य ठीक से सुन सकता है और पशु ऐसा नहीं कर सकता. So just to read again the translation, the Lord as super soul pervades all things, just as fire permeates wood, and so he appears to be of many varieties, though he is the absolute one without a second. परमात्मा रूप में दोबारा पढ़ रहे हैं परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं से में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं वे अनेक प्रकार के दिखते हैं. So very important by Srila Prabhupada. तो इसको तात्पर्य में बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने इस उदाहरण के माध्यम से हमारे सामने रखा है. So the message or instruction being conveyed that the Lord is present. We say omnipresent. He's present in every atom. तो भगवान सर्वव्यापी है मतलब भगवान हर जगह है और अपनी जो उनकी जो ऊर्जा है उससे वो हर जगह पे व्याप्त है. The goal used to describe as the atom by studying more closely how even one simple atom and the most developed city in the world today. प्रभुपाद जी जो है वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसे शब्दों का. प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो जब हम उनका जब हम अध्ययन करते हैं देखते हैं कि इतना छोटा सा जो कण है भी बड़े बड़े शहरों की जो टाउन प्लानिंग है उनसे ज्यादा इसमें जो है. It means that this material creation is very, very elaborate, which is, of course, an indication of the Lord's inconceivable potencies. Yeah. तो ये भगवान की जो ऊर्जा है उसका एक है उनकी दिव्यता का कि इतने छोटा सा कण भी इतना ज्यादा व्यवस्थित होता है. So it means that actually the Lord is देखी जा सकती है बड़ी जगहों पर भी देखी जा सकती है. तो फिर इसको देखने के लिए जो है भगवान का एक दर्शन चाहिए जिससे हम भगवान को हर जगह भगवान की ऊर्जाओं को हर जगह देख सकते. So Prabhupada gives nice examples, just like fire is everywhere. If you take a piece of wood, fire is in that wood, but there's a process how to bring out the fire from the wood. इसको भगवान की ऊर्जा को देखने का एक तरीका होता है. जैसे लकड़ी में हर जगह आग है लेकिन वो आग दिखती नहीं, उसको आग को महसूस करने का एक तरीका होता है. Within milk there is butter, but there is a process how to bring out the butter from the milk. दूध में हर जगह मक्खन है और उस मक्खन को निकालने के लिए जो है उसका एक तरीका है. Yeah. And within this material world there is divinity, there is transcendental energy, there is the divine, there is the presence of the Lord fully everywhere. But there's a process how to come in contact with that divine. उसी तरीके से जैसे लकड़ी और दूध में लकड़ी में आग है दूध में मक्खन है उसी तरीके से संसार में जो भौतिक संसार है उसमें भी एक दिव्यता है और उसको देखना कैसे उसकी भी एक प्रक्रिया है. Yeah. Actually, it's a very nice purport. Prabhupada makes very strong points. For example, he explains that an animal, that is the difference between animality and humanity. One who is animal, he has the ability to hear, but actually he does not have the ability to hear or to realize in the same manner that a human being who also has the ability to hear. Human being, his ability to hear transcendental subject matters will evoke transcendence, whereas in an animal,
it will be different. तो एक पशु और मनुष्य के भीतर का भेद यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पशु जो होता है वो सुन सकता है, लेकिन उसके अंदर जो है दिव्यता, भगवान की दिव्यता को महसूस नहीं हो सकती, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता दिव्यता का। जबकि एक मनुष्य सुन सकता है तो उसके अंदर एक क्षमता है कि उसको ठीक से समझे और उसके अंदर भगवान की जो दिव्यता है उसका की अनुभूति हो। Of course, animals also benefit from hearing Bhagavatam or hearing the holy name or hearing any transcendental sound. तो पशु भी जो है वो भी हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम भागवत श्रवण करके वो भी उसका भी उसमें लाभ होता है, लेकिन वो दिव्यता उसके अंदर नहीं की अनुभूति नहीं हो पाती। We find examples in Shastra and examples in the pastimes of Lord Chaitanya, how by his presence, I mean, we are here in Jharkhand. So in the Jharkhand, when Lord Chaitanya was traveling, as we know, to Vrindavan, passing through the Jarikanda forest, by his presence, by his transcendental vibration of the holy name, he was able to get animals in the forest, wild animals in the forest, chant the holy name and dance in ecstasy. जब चैतन्य महाप्रभु जब यहीं झारखंड से ही जा रहे थे तो उन्होंने जंगल में एक बार कीर्तन किया और जानवर भी भगवान का नाम सुन करके वो भी जो है वो भी इनको भी भगवान का साक्षात्कार होने लगा। So yeah. तो जो जानवरों में भी ये होती है, इतनी इतनी क्षमता होती है कि भगवान का नाम सुन के वो दिव्यता को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं। So if the animals in Jharkhand forest can be made to chant and dance, what about human beings? यहीं झारखंड में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब जानवरों को भगवत साक्षात्कार करा सकते थे तो फिर हम तो फिर भी इंसान हैं। Yeah. There's also the nice example of Shivananda Sen, who was one of the very close associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था शिवानंद सेन। When the devotees were traveling every year from travel through, actually it would take many days for them to travel, and during that time Shivananda Sen had somehow developed, or one dog had developed an attraction for the devotees and was following them. तो शिवानंद सेन जो थे वो नवद्वीप मायापुर से जगन्नाथपुरी के लिए हर साल रथ यात्रा के समय एक यात्रा लेके जाते थे और उनके साथ एक बार की बात है कि कुत्ता भी उनके साथ आकर्षित हो गया, वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। Actually, anyone who associates with devotees, including animals like dogs, they actually become devotees. Even जो कुत्ते जैसे जो निम्न पशु हैं वो भी अगर भक्तों के संग में आ जाए, भक्तों के प्रति एक आकर्षण अगर उनके अंदर भी हो जाए तो वो हम देखते हैं कि वो भी भक्त बन जाते हैं। So Shivananda Sen actually had developed some affection and attachment for this particular dog that he considered like a devotee, because that dog every day was taking prasadam. तो वो कुत्ता जो था वो भक्तों के साथ रहता था, रोज रोज प्रसाद लेता था, तो शिवानंद सेन का भी उनके प्रति एक करुणा भाव विकसित हो गया। In the early days in New Vrindavan, devotees had dogs and other animals. Prabhupada, when he visited, he told them, these dogs are not ordinary dogs, they're devotee dogs. तो अमेरिका में एक जगह थी, एक मंदिर, एक ऐसे फार्म कम्युनिटी थी, खेत खलिहान वाला एक बगीचा था जहाँ खेती करते थे, वहाँ पे भक्तों ने कुछ कुत्ते पाले थे। एक बार प्रभुपाद जी आए और उन्होंने कहा ये साधारण कुत्ते नहीं हैं, ये भक्त कुत्ते हैं। So coming back to Shivananda Sen, one day actually Shivananda Sen was late in arriving with the group because he was having to pay the toll for everyone to travel, to cross over the different rivers. And when he arrived, he came to know that no one had fed the dog, and the dog had gone. He's left because nobody fed him. तो शिवानंद सेन जो यात्रा लेकर के जाते हैं उनके साथ एक बार वो यात्रा के व्यवस्थापन में व्यस्त हो गए, उनको कुछ जा करके कहीं टैक्स देना था, कहीं पे उनका पेमेंट बाकी था, वो पेमेंट कर रहे थे। तो जब वो
वापस आए तो उनको वो कुत्ता नहीं दिखा, उनको पता चला कि किसी ने कुत्ते को खाना नहीं खिलाया उसको। So when he came to know that a dog had not been given prasadam and was not there, he sent so many devotees to search for the dog. जब उनको कुत्ता नहीं दिखा तो शिवानंद सेन ने अपने भक्तों को बोला कि जाओ उस कुत्ते को खोजो। And they came back, they could not find the dog. जब वो वापस आए, भक्त लोग खोजने गए, किसी को कुत्ता मिला नहीं, वो लोग वापस आए। So Shivananda Sen was thinking, well, the dog was not given food, so I will also not take food. So he fasted. शिवानंद सेन ने कहा कि कुत्ते ने खाना नहीं खाया, वो अच्छा भक्त था, So they, yeah. उसका उपवास हो गया, तो मैं भी उपवास करूंगा। So then they were nearing Jagannath Puri. When they finally arrived in Jagannath Puri, to their immense surprise, they saw the dog sitting in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो ये लोग जब पूरी पहुंचे तो उन्होंने तो सबको आश्चर्य हुआ कि कुत्ता उनसे पहले पूरी पहुंच गया था और चैतन्य महाप्रभु के पास बैठा हुआ। The dog was sitting like this. You've seen dogs sitting like this. And Lord Chaitanya was throwing some food at the dog, and the dog was eating, and the dog was also chanting the holy name in his own way. कुत्ता जो था चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठा था, चैतन्य महाप्रभु उसको खाना खिला रहे थे और कुत्ता भी अपने भाषा में भगवान का नाम ले रहा था। So as soon as Shivananda Sen saw this, what did he do? He offered his full dandabas to the dog, actually. शिवानंद सेन ने जब इसको देखा तो उन्होंने कुत्ते को ही दंडवत किया। Pandita Samadarshina. Because he did not only see the dog, he saw the living entity within that dog, very fortunate living entity, having the good fortune of associating with devotees. तो शिवानंद सेन ने पंडिता समदर्शिना के सिद्धांत में कि एक विद्वान व्यक्ति होता है जो शास्त्रों का सही जानकार होता है, उसको हर व्यक्ति के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर भगवान का अंश दिखता है। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिवानंद सेन ने कुत्ते को दंडवत किया कि ये कुत्ता, ये जीवात्मा इतना भाग्यशाली है कि इसको चैतन्य महाप्रभु का संग और भक्तों का संग मिल रहा है। So it means that actually the Lord is present everywhere, and Prabhupada explains here what is the actual process by which we can come to know about the presence of the Lord. तो भौतिक संसार का जो हमारा जो जो शुरू में जो हमने शुरू किया था कि भौतिक संसार में हमें दिव्यता देखनी चाहिए, तो शिवानंद सेन का स्तर ये था कि वो कुत्ते के अंदर जो कि निम्न पशु है उसके अंदर भी दिव्यता को देख पाए। So, तो हमें इससे प्रेरणा मिली। so that most important and most powerful process, as again and again explained in the Shastras and by our acharyas, is simply by giving what is called favorable oral reception, by hearing, shravanam. Yeah. तो इस जो भौतिक संसार में दिव्यता को देखने के लिए हमें चाहिए कि हम श्रवण करें भगवान की महिमा कथा नाम का। Yeah. In this chapter we are reading now, Divinity and Divine Service, one of the important verses we read some time back, Srinvatam Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Vidyanta Stoya Badrani Vidunoti Suritsatam. By this process of hearing transcendental sound vibration, the effect will be that the heart will become purified. जो हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, महाराज जी ने एक श्लोक बोला भागवतम से, वो श्लोक कहता है कि जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो हमारे जो हृदय के जो मल हैं, जो हमारे अनर्थ हैं, वो कम हो जाते हैं और हमें भगवान के प्रति आकर्षण निरंतर बढ़ता रहता है। Yeah, within transcendental sound vibration, especially within the Hare Krishna Mahamantra, the whole spiritual world is contained within this Mahamantra. Krishna himself is fully present within the mantra. He is actually non-different from the holy name. भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने हरि नाम, वो हरे कृष्ण महामंत्र से भिन्न नहीं है।
और हरे कृष्ण महामंत्र में पूरे भगवत धाम छुपा हुआ है। Yeah. और हमें जो है इसका साक्षात्कार होगा जब हम इसका श्रवण करेंगे। So, as Prabhupada also nicely points out in the purport, in order for ourselves to become spiritual, to become spiritualized, isn't it? Or to become divine, the divine is within us. We are actually that divine. We are that living entity. We must come in contact with another divine living entity. तो हमारे जैसे संसार में हर जगह दिव्यता है, वैसे हमारे अंदर भी एक दिव्यता है, भगवान का अंश है, हमारे अंदर भी है। बस हमें इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसके साक्षात्कार के लिए हमें कैसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसको ये साक्षात्कार हमसे ज़्यादा है। And therefore, Srila Prabhupada would say that even the presence of one devotee, because in the early days of the movement, Srila Prabhupada, he would send sometimes only one devotee to like a new, not only a new place, but like a new country, completely, totally, Prabhupada would say the presence of one devotee in one country, anywhere, is sufficient to actually benefit and purify that whole country. तो प्रभुपाद जी जब अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने संस्था खोली थी, तो कई बार कभी-कभी किसी शहर में, किसी देश में भी सिर्फ एक भक्त को भेजते थे प्रचार के लिए। Yes. वो कहते थे कि वो एक जना ही वो पर्याप्त है पूरे देश को भक्त बनाने के लिए, उनको दिव्य साक्षात्कार का ज्ञान बता। Just like, just like if you scent of that flower will permeate the entire forest. जैसे जंगल में अगर कोई एक खुशबूदार कोई एक पेड़ हो, एक पौधा हो, तो उसकी खुशबू जंगल में बहुत दूर तक फैल जाती है। So therefore, therefore the importance of having, that is the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who wanted that the holy name be introduced in every town and village. So therefore, even the presence of one devotee in some village is sufficient to completely transform that village spiritually. तो अगर एक भक्त, अगर किसी गांव में एक ही भक्त हो, तो वो एक भक्त भी पर्याप्त हो सकता है पूरे गांव में भगवत साक्षात्कार का प्रचार प्रसार करने के लिए। And we can also understand, to bring things a bit more home, closer to home, that the presence of one Gurukul somewhere is sufficient to actually completely permeate the surrounding villages wherever that Gurukul is going to be. Therefore, the importance of establishing Gurukulas as widely as possible all over India. तो उसी प्रकार से भक्त गांव को में काफी प्रचार कर सकता है, उसी प्रकार से एक गुरुकुल भी जो है काफी प्रचार कर सकता है। अगर किसी गांव में एक गुरुकुल हो, तो फिर वो भी बहुत सारे लोगों को जोड़ सकता है, बहुत सारा प्रचार कर सकता है। Therefore, the importance of those who are being trained in Gurukula to understand these very, very deep and important instructions given in these purports given by Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में जो है ये गुह्य ज्ञान दिया गया है, इसको जो है हमें समझना चाहिए। Yeah. So. Okay, any questions or comments on this? किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है? Yes. Hmm? God is present everywhere, Yes, but our ignorance and modes is also present. are such that we are like born to that modes. So how to overcome the modes? Those modes. Yes. तो प्रश्न है कि आप महाराज जी आपने आज क्लास में बताया कि दिव्यता भगवान की दिव्यता की अनुभूति कहीं पे भी की जा सकती है, तो
लेकिन हम लोग गुणों से बंधे हैं, तो इसको कैसे कर सकते? This is the primary subject matter actually of the Bhagavad Gita. In many different chapters of the Bhagavad Gita, that is, that question is addressed, how to overcome these modes of material nature, because they are preventing us. These modes of material nature are what is preventing us from actually coming ये महाराज जी बता रहे हैं कि भगवद गीता में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है कई अध्यायों में कि हम कैसे उस गुणों से ऊपर जा सकते हैं। And that is only possible by adopting the recommended process, which is by the cultivation of this transcendental knowledge. In other words, by using our higher, the faculties of the higher self. By the higher self, we learn to control the lower self. By the mode of goodness, we learn to do away with the mode of passion and ignorance. In other words, it's a gradual process, which is, of course, based on hearing, whereby we gradually elevate ourselves from the lower consciousness to higher consciousness, from material consciousness to spiritual consciousness. भगवद गीता में इसको बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है कि हम कैसे चरणबद्ध तरीके से हम सतोगुण का या जीवन में सतोगुणी जीवन शैली अपनाए कि हम रजोस तमोगुण से ऊपर उठ सकें, और उसके जो चरणबद्ध तरीके से जितने भी उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं भगवद गीता में, उसका पालन करें तो ये हो सकता है, और उसी प्रकार हम गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और भगवत साक्षात्कार का अनुभव कर सकते हैं। The last instruction in the third chapter of the Bhagavad Gita gives that very last shloka answers that question very nicely, whereby Krishna is explaining that by spiritual intelligence means spiritual knowledge, transcendental knowledge. We can only transcend these modes of material nature. We can only conquer over these modes of material nature by transcendental knowledge. भगवद गीता में उसमें बताया है कि हम कैसे जो है भगवान का साक्षात्कार करने के लिए ये निचले जो गुणों हैं, जो गुणों से बंधे हुए हैं, उनसे कैसे ऊपर उठ, इस पे काफी विस्तृत चर्चा की। इसके लिए आप भगवद गीता के तीसरे अध्याय का आखिरी जो श्लोक है उसको पढ़ सकते हैं। Actually, whenever we give Bhagavatam class, it would be good to have, in addition to the Bhagavatam, a copy of the Bhagavad Gita. हम जब भी भागवतम रखते हैं, भागवतम क्लास होगी तो उसके साथ एक भगवद गीता की भी एक कॉपी होती है। Yeah. Yeah. Any other? Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai, Sri Prabhupada ki Gaur Pimanande. महाराज